focused attention given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if you look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution. Let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned to meet at 11:30 a.m. today. तो देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही जो कि स्थगित कर दी गई, लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं। अगर लोकसभा का हम जिक्र करें तो 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है और राज्यसभा की कार्यवाही भी 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष जो कि कई मुद्दों को लेकर लगातार सदन में हंगामा कर रहा है और हंगामे की वजह से दोनों ही जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, फिलहाल कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू किया। दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित, राज्यसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।